Okay. Very good morning to all of you. Sorry for the technical problem. Myself, Dr. Ekhlakh Ahmed, Faculty of Education, Integral University, Lucknow, from the Department of Education. And today, my topic is hypothesis. So, before we start the topic, I want to know that from which subject, in which subject you are going to research. What is subject? See, mechanical engineering. Okay. And you, pharmacy. And the last one is physics. Okay. And you is bioscience. So, most of the department, ज़्यादातर डिपार्टमेंट्स के लोग हैं एजुकेशन में भी कोई है ट्रेनिंग फ्रॉम एजुकेशन ओके सो आई एम फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन सो आई थिंक यू विल बी मोर बेनिफिटेड फ्रॉम दिस मैटर बट आई वांट टू नो समथिंग related to research. What do you mean by research? Can you please, in one sentence, in one or two words, what is research? Please. Gather information into a particular field. Okay. Define objective. Okay. Thank you. Anyone else? Or to the topic, sir? Finding new things. Yes. Anyone else? Okay. Actually, research is something new, find out something new, or search again and again to find out something new. Search again and again to find out something new. Okay? This is the research. In one line, searching again and again to find out something new. Okay? Research is totally different from discovery. Discovery अलग है, research अलग. Discovery is something totally new. But in research, you try to search some basic concept or something applicable part of the theory which is already exists. Okay? In research, you formulate your objective. When your topic decided, the first stage of research is
formulating your objective. This is more important. On the basis, you are going to conduct your research. And after that, something degree of related education. Okay? And to achieve that objective, we need hypothesis. So, hypothesis is not a new concept, but it is the means to achieve that objective which you are following. Suppose, an example, you want to go to Charbagh railway station. This is a very practical example. You want to go to Charbagh railway station. What are the different means for reaching Charbagh? It is objective. कोई भी बता सकता है आप 4 बार जाना चाहते हैं, ये आपका ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पे इंटीरियर निगोशिएट है। वो कौन कौन से मीन्स हो सकते हैं, कौन कौन सा टेंटेटिव मीन्स हो सकता है, आपको यहाँ से जानना है। व्हाट आर द डिफरेंट टेंटेटिव मीन्स फ्रॉम व्हिच you reach the Charbagh railway station? Yes. By car, this is the one probably means. And there are different ways to reach the railway station at Charbagh railway station. And name those means. Means का नाम तो बताइए, साधन के नाम बताइए. These are the probable solutions. You have a problem and you want to solve that problem. So, what are the probable answers or what are the probable situations? Solution, probable solution, or you call it tentative solution, from which you can achieve your objective. सिंपल सी बात है, चारबाग आपको स्टेशन जाना है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ बैठे हैं सेमिनार में, यू प्लान दैट बाई कार, बाई ऑटो, बाई बस, बाई योर ओन व्हीकल, और बाई फुट आल्सो, पैदल भी जा सकते हैं, मैंने कोई टाइम नहीं बताया, किसी से लिफ्ट लेके जा सकते हैं। These are the probable answers for reaching Charbagh railway station. Okay? अब क्या करना पड़ेगा, आपने यहाँ पे प्लान कर लिया कि ये डिफरेंट मीन्स से वहाँ जाने के लिए पहुँचना है आपको, फिर करेंगे क्या, गेट के बाहर जाएंगे, यूनिवर्सिटी गेट के बाहर जाएंगे, वहाँ पे आप अपनी जो भी प्लानिंग है वो करेंगे। हो सकता है आपने कैब बुक किया, कैब इज नॉट अवेलेबल, फिर क्या करेंगे, क्या करेंगे, दूसरे ऑप्शन पे जाएंगे, हो सकता है ऑटो भी ना मिल रहा हो, तीसरे ऑप्शन बाई बस, हो सकता है वो भी ना मिल रहा हो। सिर्फ ये कहना है मेरा कि जो भी आपके पास प्रोबेबल आंसर्स है या प्रोबेबल सॉल्यूशंस है, टेंटेटिव सॉल्यूशन है, यू हैव टू टेस्ट। So without testing hypothesis or without testing tentative solution, you cannot achieve your objective. जो भी आपने बनाया है ऑब्जेक्टिव, विदाउट प्रोबेबल सॉल्यूशंस हैं या विदाउट जो प्रोबेबल आंसर्स हैं या सॉल्यूशन है, उसको टेस्ट किए, you cannot achieve your objective. I think this is the best example to understand the hypothesis. So, hypothesis is a tentative solution of any problem, basically related to the research. In various sciences or in other sciences also, we are using hypothesis. In some researches, we are not using hypothesis because there is no need. There are some other terms related to the hypothesis. One is assumption, another is postulate. Assumption, specific idea. What is assumption? Assumption is also related to the hypothesis.
postulate is also related to the hypothesis. There are basically three terms used. One is assumption, second one is hypothesis, and third one is postulate. किसी को कोई आइडिया है assumptions के बारे में? Any idea about assumption? Yes. Assumption is differently you make assumption. Give an example. No. It is not related to assumption. It is related to hypothesis. Assumption is one which cannot be tested. There is no need to test. That is called assumption. What is one? That is assumption. No need to test that what is two or three. What is one? It is sufficient. No need to test. And another is postulate. It is related to mathematics, but postulate is also related to this term, in which like a plus b is equal to b plus a. बहुत सिंपल है. आप कहेंगे ये क्या है? 2 plus 3 5. 3 plus 2 5. Postulate. But how to do it? It is very difficult to prove that a plus b is equal to b plus a. And it is related to the abstract algebra of mathematics. There are 9 postulates. कोई मैथ्स का है? जानता होगा. ठीक है? ओके. So, hypothesis is a tentative assumption made in order to test its logical or empirical. In first sentence, it is clear that hypothesis must be tested in logical or empirical. Empirical means, you understand empirical means? What do you mean by empirical? Yes. Good. Which we gain from your own experience. जो आप अपने एक्सपीरियंस से गेन करते हैं उसको कहा जाता है empirical. नॉलेज डिफरेंट टाइप से किताब पढ़ लिया वहाँ से भी आ गया आपको. आपने किताब में पढ़ ली कि ये साइकिल चलाने का मेथड है. ठीक होता है ये होता है आप चलाएंगे साइकिल से. पहले से चला लेंगे साइकिल. जब तक आपके पास फिजिकल एक्सपीरियंस नहीं होगा नहीं चला. And the origin of the word is derived from the Greek word which is ये सब आप जानते हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है. The etymological meaning of hypothesis is hypothesis. This is the two words which means less than or less certain than a truth. Thesis is already proved, but hypothesis is not. It must be tested, in which you can reject or you can accept the hypothesis. In the null case, or in the null form of hypothesis, you can accept or you can reject. So, it is something. Statement of the prepositions are a reasonable guess. It is also related to the guess. Reasonable guess. Like, for an example, the IQ of boys students is more than the IQ of girls students. The IQ of boys students is more than the IQ of girls students. It is a guess. Guess है कि नहीं? जब तक आप इसको टेस्ट नहीं करेंगे कोई नहीं. Simple, it is a guess. And when you say
there is no significant difference in the IQ of boys and girls students. It is called hypothesis. It is also there, but it is in the null form. Okay, null form of hypothesis. आगे चलते आपको बताऊं. This is also related to the null hypothesis. Oh, sorry, hypothesis. Hypothesis must be very clear and precise. This is the most important characteristic of the hypothesis. That hypothesis must be very clear, बहुत clear होना चाहिए and precise. Precise मतलब short form, जिससे कि बहुत ज़्यादा आपको समझने में प्रॉब्लम हो. बहुत ही क्लियर होना चाहिए. जैसे मैंने अभी कहा, there is no significant difference in IQ of boys and girls at secondary level. It is very clear. Okay, you cannot say that the IQ of student is less than the IQ of others. It is not clear. So the hypothesis must be very clear and precise way and capable of being tested. आपको ऐसा हाइपोथेसिस बनाना है जो टेस्ट भी हो सके. ऐसा नहीं है कि कुछ भी आप बना दीजिए और उसको टेस्ट कर लेंगे. यहाँ बैठे हुए हैं, सो रहे हैं, तो सोचते हैं तो कोई ऐसी मशीन आएगी, मुझे यहाँ से उठा के सीधे घर पे पहुँचा देगी. पॉसिबल है? इट इज नॉट. So the hypothesis must be testable. कोई ऐसी hypothesis न बनाइए जो टेस्ट ही नहीं. So hypothesis must be testable. And it is limited in scope that consistent with none are established facts. It is very important that जब तक आपके पास practical knowledge और theoretical knowledge न हो, whenever you have the theoretical knowledge or practical knowledge of any concept or in any field, you cannot formulate the hypothesis. Best है. जब तक आपके पास knowledge नहीं है, theoretical भी और practical, तब तक आप hypothesis को best way नहीं कर सकते. You cannot formulate the hypothesis in the best way. Whenever you have not the knowledge of theoretical or many subjects and many fields. These are the definitions of hypothesis. In one definition, a hypothesis can be defined as a tentative explanation of the research problem. ये मैं दे दूंगा फोटो में. मेरे पास है, आप लोग. मेरा कुछ नहीं है, थोड़ा सा मेरा है और सब दूसरे का. ठीक है. The hypothesis can be defined as a tentative explanation of the research problem, a possible outcome of the research, or an educated guess about the research outcome. Okay, this is a very simple definition in which tentative explanation of the research problem, and the research problem is related to your topic, in which you made number of objectives to achieve that goal or that solution of the problem. जो आपने प्रॉब्लम बनाया है, जो भी आपका टॉपिक है, उसी को सॉल्व करने के लिए या उसी का आउटकम देने के लिए, उसी के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए सारा रिसर्च का प्रोसेस. We process all the activities. We do all the activities related to your research just for the solution of the problem. जो भी आपका सोल्यूशन है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी आपका टॉपिक है, उसी को सॉल्व करने के लिए हम सारा रिसर्च का प्रोसेस करते हैं. चाहे वो ऑब्जेक्टिव की बात हो, चाहे आपका डिजाइन की बात हो,
चाहे आप एनालिसिस की बात हो या जो मेन ऑब्जेक्टिव है आपके रिसर्च का, जस्ट फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इट। तो एक पॉसिबल आउटकम ऑफ द रिसर्च, जो भी आपका रिसर्च है, एक आउटकम ऑफ द रिसर्च ये लिखा गया, पॉसिबल आउटकम ऑफ द रिसर्च, जो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एंड एंड एजुकेटेड गेस्ट, अभी हमने कहा ना कि गेस्ट तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वैसा गेस्ट नहीं होना चाहिए, एजुकेटेड गेस्ट होना। एजुकेटेड गेस्ट का मतलब क्या है? You can formulate your hypothesis, you can guess educated whenever you have the knowledge, theoretical and practical knowledge about your subject, about your area of the, आप ऐसे guess नहीं कर सकते हैं जब तक आपके पास theoretical और practical knowledge न हो उस फील्ड का। अभी आप मुझसे कहिए कि आप बायोसाइंसेज में रिसर्च करा नहीं करा, इसलिए नहीं करा सकता कि मेरे पास theoretical और practical knowledge है ही नहीं। अभी आप कहिए कि मैं जो है स्टैटिस्टिक्स में रिसर्च करा नहीं करा, या उसमें आप हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट कर दीजिए, नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते कि मेरे पास थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है, उस फील्ड का नॉलेज नहीं है, उस एरिया का जिस पर आप रिसर्च करने जा रहे हैं उसका मेरे पास नॉलेज नहीं है। ओके, एंड एजुकेटेड गेस अबाउट द रिसर्च आउटकम। वन मोर डिफिनेशन given by Indian Hack, and a proposition which can be put to test to determine its validity. Do you know the word validity? कोई जानते? Validity is validity. Validity. ये कहा जाता है लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में, लेमैन की लैंग्वेज में, कि दिस पेपर इज नॉट वैलिड, दिस डॉक्यूमेंट इज नॉट वैलिड। क्या मतलब हुआ? ज्यादातर हम लोग लॉ के लैंग्वेज में, लीगल लैंग्वेज में कहते हैं दिस इज नॉट वैलिड। इट मीन्स जो जिस पर्पज के लिए बना, इफ it fulfill its purpose, that it is valid, otherwise it is not valid. पेन का पर्पज क्या है? क्या पर्पज है? किस लिए बनाए? सिंपल सा लिखने के लिए, कागज पे लिखने के लिए। यदि ये सही से लिख रहा है पेज पे, तो ये अपने पर्पज में को फुलफिल कर रहा है, तो इट इज वैलिड। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक प्रोपोजिशन which can be put to test to determine its validity। जो भी आपने पहले से बनाया है उसको टेस्ट करेंगे और ये देखेंगे कि ये वैलिड है। लाइक मैं ये कहूँ कि देयर इज ए पॉजिटिव सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन योर IQ and your achievement। There is a positive relationship between your IQ and your achievement। It is a hypothesis। मेरे कहने से नहीं होगा जब तक आप इसको टेस्ट नहीं करेंगे। ये स्टेटमेंट है, ये हाइपोथेसिस है, ये एजुकेटेड गेस है, लेकिन जब तक इसको नहीं कह सकते जब तक यू हैव टू टेस्ट। टेस्ट करना क्या है? वो अलग तरीका है, अभी आपको लोग बताएंगे कैसे टेस्ट करते हैं। Different with the help of different techniques, we test the hypothesis। Okay, so this is related to the definition, and now the nature of it। What do you mean by nature? कोई बता सकता है नेचर किसे कहते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर, और बताइए और यस ओरिजिनलिटी। कोई एग्जाम्पल बताइए, गिव एन एग्जाम्पल।
मुश्किल हो गया, थोड़ा सा सोचिए। वन वे नहीं क्लास होगी रिसर्च की, मैं आपको बता रहा हूँ। टू वे होगी तो ज्यादा अच्छा है। वन वे में तो मैं पढ़ा के चला जाऊंगा, आपको क्या पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा। मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ, बहुत सिंपल एग्जाम्पल नेचर का। जो जेन्यून किसी की भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसको नेचर का है। दही में आप कितना भी चीनी डाल दीजिए, खट्टा तो रहने नहीं रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, वो उसका नेचर है। हम ये कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं कितना भी सांप को दूध पिला दो, जब वक्त लगेगा, मौका लगेगा, डसेगा जरूर, वो उसका नेचर है कि नहीं। वो उसकी जेन्यून, जो आपने कहा ना ओरिजिनलिटी, वो उससे जुड़ा हुआ है, वो हट नहीं सकता। आप कितना भी बढ़िया से उसको पाल लीजिए, लेकिन जैसे ही मौका लगेगा डसेगा जरूर। तो ये है नेचर ऑफ हाइपोथेसिस। Identify the research objective. Basically, we formulate the hypothesis on the basis of objective. It is a means to achieve the objective. जो ऑब्जेक्टिव आपने बनाया है अपने रिसर्च के लिए, एक्चुअली हम उसी को अचीव करने के लिए, जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया ना, आपका ऑब्जेक्टिव है 4 बार जाना, और वहीं पहुंचने के लिए आपने जो डिफरेंट तरीके, जो डिफरेंट मीन्स की बात करी, और उसके बाद उसको टेस्ट किया। टेस्ट में वो फेल भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या काम है कि आइडेंटिफाई योर रिसर्च ऑब्जेक्ट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई योर रिसर्च, बिकॉज हाइपोथेसिस डिपेंड्स ऑन योर ऑब्जेक्ट। क्या करना चाह रहे हैं आप, क्या लेना चाह रहे हैं। Is there any difference between aim and objective? किसी को आइडिया? एम एंड ऑब्जेक्टिव, कई बार लोग एम भी बोल देते, एम ऑफ रिसर्च, एम डायरेक्टेड टुवर्ड्स, you can say that objective, aim is more wider, more comprehensive than objective, and it takes more time to achieve the aim. But you can achieve your objective within a small span of time. It is more clear, and you can achieve your objective in a small period of time. Okay? So, identify your research objectives, in which you make different types of objectives, and other, identify the key abstract concepts involved the research. It is related to the theoretical knowledge of your area, theoretical knowledge of your subject. And third is identify relationship to both the problem statement and the literature review. Review of related literature. Okay? क्यों किया जाता है, किसी को आइडिया? Why we are doing the review of related literature? In the second unit or in the second chapter of research, review of related literature. There is a association between the theoretical knowledge and the review for any research. It is very important to review the research which have already conducted related to your topic or related to your subject. Why? क्यों करते हैं हम लोग? Yes. For more understanding of the related field, we are conducting the review of related literature. We are, yes.
Yes. Yes. To avoid repeating. Okay. Yes. Yes. Please. Aims and objective. With example. Okay. Uh, like. Okay. For an example, the aim of education is overall development or all-round development of a personality of a child. It is called the aim of education. It is wider, it takes time to achieve, and in objective form, as a part of objective form, there are different types of development for a child, like physical development, social development, emotional development, okay, mental development. These are the different parts of development for a child to achieve that aim, like overall development or all-round development of a child. Okay, and we can achieve it like uh, for the mental development, we are uh, studying in schools, colleges, universities. We are living in the society. We take we learn a lot of things from the society, and uh, we develop social ethics, social norms for emotional development, another thing. So for the aims, it is wider or comprehensive, but it takes time, and we cannot say that for all parts of the development, we achieve the 100% overall development of the person. तो जरूरी नहीं है कि हम पहले 100% हमने अचीव ही कर लिया है समझ में गेट इट माय पॉइंट और नॉट यस ऑब्जेक्टिव आर द स्मॉलर पार्ट ओके the problem cannot be scientifically solved unless it is reduced to to hypothesis form. Okay, this is also related to the nature, and it is a powerful tool of advancement of the knowledge, consistent with existing knowledge and conducive to further inquiry. It is also related to the nature of the hypothesis. It can be tested, verified, or falsified. It is more important that hypothesis can be tested with the help of suitable statistical techniques. On the basis of the data, nature of the data means the information you collected from the respondent or you collected from your experiment. This is called the information or this is called the data in research form. So it can be tested. Without testing hypothesis, you cannot say or you cannot conclude any result. Hypotheses are not moral or ethical question. It is not related to the moral. Like सारे लोगों को सत्यवादी होना चाहिए ऐसा कुछ नहीं. You cannot test. In one time you are honest and on another time you are not honest. It is neither too specific nor too general. बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा जनरल भी नहीं. ऐसा इसलिए कहा है कि यू कैन नॉट टेस्ट विद स्टैटिस्टिकल टेक्निक. बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक कर देंगे कभी भी नहीं हो पाएगा और बहुत ज़्यादा जनरल करेंगे कभी. ठीक है. एंड नाउ हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन.
फॉर्मुलेशन हम कब, कोई आइडिया है? When we formulate hypothesis. Anyone please? Yes. Okay. और कोई? जो मैंने लिखा है वही आपने बता दिया। हाइपोथेसिस का जो फॉर्मुलेशन हम लोग करते हैं जस्ट टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, मैंने पहले ही आपको बताया। When we completed our review of related literature in which we understand the nature of the problem, we understand the nature of the research, we understand the type of the research and the different findings which are already on the portal. Then we try to formulate our hypothesis just to achieve the objective. But it is very important that you must formulate your hypothesis very carefully. You have the different knowledge, you have the knowledge about your subject, different research which is related to your problem, and different ideas about the design of the study, about the uh, tools from which you will collect the data. After that, you formulate the hypothesis. But it is very important that you formulate your hypothesis very clearly. Okay? And it is formulated when the researcher is totally aware of the theoretical and empirical background. जब तक आप पूरा थ्योरेटिकल नॉलेज के बारे में नहीं जानेंगे और एम्पिरिकल नॉलेज आपके पास नहीं होगा, तब तक आप हाइपोथेसिस को जो बनाएंगे, मुझे नहीं लग रहा है कि वो इतना अच्छी हाइपोथेसिस। ठीक है, एक मैं आपको वो बताऊं, जैसे किसी ने आके मुझसे कहा कि आप जरा मेरा स्टैटिस्टिकल टूल बता दीजिए, सॉरी एनालिसिस में कौन सा टूल लगेगा स्टैटिस्टिकली, ये बता दीजिए। Which statistics will be used for the analysis of research? मैंने उनको 1 मिनट में बता दिया, ये आपका डेटा है, ये लेटर लिखा और ये आपका। क्या ये सही है? नहीं, इट इज नॉट करेक्ट। जब तक आप उस प्रॉब्लम के बारे में, उस डेटा के बारे में, उस डेटा के नेचर के बारे में नहीं जानेंगे और जब तक टेस्ट नहीं करेंगे, 500 लोगों का डेटा आपके पास दे दिया गया और आपसे कहा गया कि तुरंत इसका एनालिसिस करके दे दीजिए, आप तुरंत कर देंगे बिना जाने? You cannot do your analysis unless first you have to check the data, first you have to check the nature of the data, types of the research, then you will be able to use appropriate statistics for the analysis. So it is very important to know the background and empirical knowledge of the subject or of the area of the research. It is very important. And now, the purpose and function of hypothesis. It is very clear that the explanation for the relationship between those variables that can be empirically tested. Did you know the variable? Variable. Yes, please. What is variable? Not topic.
Variable means which vary. Yes, variable means which vary. Independent variable, dependent variable, intervening variable, बहुत सारे variables होते हैं. ठीक है. So the relationship between the variables that can be empirically tested, like there is no significant relationship between your SES, socioeconomic status, and your achievement or your performance in the examination. There is no significant relationship between socioeconomic status and your achievement in examination. This is the relationship between the two variables, in which one variable is socioeconomic status and another is your achievement or your performance. So this is the relationship between variables. There is no significant, or you can say that there is no effect of CI, computer assisted instruction, on your achievement. This is the relationship in which CI is independent and your achievement is independent. Okay? Your motivation, your intelligence, your IQ, your environment, these are also the part of, these are also the other kind of variables, in which in experimental research we can manipulate in independent variables and see their effect on the dependent variable. In experimental research we can manipulate in independent variables. Okay? Another one is it furnishes proof that researcher has sufficient background knowledge to enable him or to make the suggestions in order to expand existing knowledge. You know that the research is something, the bridge between the existing knowledge and bridge between the existing knowledge and न्यू नॉलेज. जो आप करने के लिए जा रहे हैं, जो आप अचीव करने के लिए जा रहे हैं अपने रिसर्च प्रोजेक्ट से या अपने टॉपिक से. यस, रिसर्च. यस, I said that this is the bridge between the existing knowledge and the new knowledge. But research is something new. Yes? From the existing knowledge, research is not a fundamental or not a totally new. It is based on the existing knowledge, in which we can associate or we can establish a relationship on the basis of the existing knowledge जो ऑलरेडी है. रिसर्च में हम कोई थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यहाँ पे एस्टैब्लिश नहीं कर जो बिल्कुल नहीं. हाँ, यस. यस, yes, researching for the new things. Extended form in which you can research. Yes. There are several types of research on the basis of different parameters. One is basic research, which is also called the pure research, or the fundamental research, in which we research something totally new, जो पहले है ही नहीं, जो पहले exist ही नहीं करता. And another is applied research, in which we are using the application part, or we are searching the different applied part, application part of the basic research or the existing knowledge.
and one is action research. In another form, there are several types of research like philosophical research, historical research, experimental research, ex post facto research, cross-sectional research, longitudinal. There are several types of it. Okay. So, and it gives direction to an investigation. Hypothesis gives the direction to an investigation, in which we uh, give the direction. Okay? And it is structured at the next phase in the investigation and therefore furnishes continuity to the examination of जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको हम लोग एग्जामिन करेंगे are the direction gives toward direction. These are also the characteristics of an hypothesis. It should be elucidating power. It means it should be very clear. बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. There is no ambiguity. It should describe the furnished and acceptable explanation of the phenomena. And it must be verifiable, it is tested, it must be formulated in simple and understandable terms. It is very important that formulated in simple words or in simple sentences and understandable. सबको समझ में आए. ये बहुत स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए कि इसके लिए एक्सपर्ट को बुलाना पड़े या जो एक्सपर्ट हो वही समझे. It must be very clear, very simple sentences and very simple form. Yes. Yes. Characteristics are the basic characteristics, are the general function, general features. What nature is structure? Nature is something different. Characteristics is related to the general features. And they are A. Okay. It should correspondence with the existing knowledge. It is simple. And types of hypothesis. One is descriptive, in which we describe. Yes. कुछ बोलना चाह रहे हैं? Attendance नहीं हुआ. अभी बनानी तो है. अच्छा सर्कुलेट होती है. तो कैसे की जाती है? मुझे लग रहा है कि उन्होंने रख के चले गए. काफी लोग हैं. इससे अपना अपना ही करिएगा. Yes. Yes. कंटिन्यू करें. ठीक है. ये तो चलता रहेगा. Okay. So, descriptive hypothesis in which we describe the variables or the relationship between the variables. These are the propositions that describe the characteristics such as size, form, distribution of the variable. It is related to the variables in which we see the relationship. Like the rate of unemployment among arts graduates is higher than the commerce graduates. It is written in the descriptive form. Okay. Relational hypothesis, in which we see the relationship. These are the propositions in which describe the relationship between two or more variables. Okay, like families with higher income spend more for the relationship for the relation upper class people than fewer children in lower class people. It is just the
relational hypothesis in which you can see the relationship between the variables. Causal hypothesis, it states that the existence or the change in one variable cause and leads the effect on another variable. In educational research, it is also called the causal effect, in which you see the effect, okay, cause and effect in educational research. You can see. The working hypothesis, it is a simple, and the most important is null hypothesis. In most of the behavioral science research, we are using the null hypothesis, in which we say that there is no significant difference, or we say that no significant relationship between the variables. इसके पीछे एक लॉजिक ये भी कहा जाता है कि जब तक आपके पास प्रूफ नहीं है, you cannot decide anything, or you cannot conclude anything. एक एग्जाम्पल मैं दूँ आपके पास, किसी ने कितना बड़ा भी गुनाह किया है, जब तक जज के सामने उसका फैसला नहीं होता, हम उसको आरोपी नहीं मानते। कुछ भी किया हो, जब तक वहाँ से फैसला नहीं आएगा, जो भी डॉक्यूमेंट एविडेंसेस के बेसिस पे हम उसको नहीं मानते। तो ये वही है नल हाइपोथेसिस, जिसमें हम नल फॉर्म में हाइपोथेसिस करते हैं और फिर टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के बाद जो एक्सेप्ट हो रही है, it may be accepted on the basis of testing. Like there is no relationship between the average income and the expenditure on each tuition. In null hypothesis, they state that there is no relationship between the average income and the expenditure on it. There are two forms of it. पहला relationship का है, दूसरा आपका है null का. Like there is no significant difference between male IQ and female IQ. The achievement in male students and female students. There is no relationship between your IQ and your participation in co-curricular activities. This is called the null hypothesis. Frame or hypothesis in null form and the test. इसके पीछे एक लॉजिक है, जब तक आपके पास टेस्ट न हो, यू कैन नॉट से नेगेटिव फॉर्म। यस, जब हम इसको टेस्ट करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा। जब तक हमारे पास टेस्टिंग नहीं हो, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस, statistical population statement about the statistical population. There are derived from the sample. These are quantitative in nature and there are numerical measurements. Like group A is older than group B. It is based on the quantity. It is based on the numeric data. Okay. And now the characteristics of the good hypothesis, in which conceptual clarity, it is very important. Specificity, testability, availability of the techniques, theoretical relevance, consistency, objectivity, and simplicity. These are the characteristics of the good hypothesis. The word is consistency. तो जानता है consistency? Anyone knows? Yes. लगातार. क्या? तो एग्जाम्पल बताइए. Yes. ठीक है, एक घड़ी है आपके पास, वो रोज एक ही टाइम पे 11 बजाती है, क्या कहेंगे उसको? कंसिस्टेंट है या ठीक है? एक पेपर दिया गया आपको, 5 बार हमने आपको पेपर दिया और 5 बार में आपके जो स्कोर आ रहा है वो कंसिस्टेंट आ रहा है, वो पेपर क्या कहलाएगा?
saying a concept. Same story repeated again and again. Okay? Objectivity, समझना objectivity. Simplicity, this is very common. Okay? And the sources of hypothesis from which we formulate or we construct our hypothesis, theory, observation, analogy, intuitions and personal experiences, findings of studies, state of knowledge, culture, and continuity of research. This is related to the sources from which we formulate our hypothesis. Theory, you must have the theoretical knowledge. Observations, you have to feel observation of the events, phenomena. Analogy, intuitions and पर्सनल एक्सपीरियंसेस, आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस क्या है, इंट्यूशंस क्या है आपको, फाइंडिंग्स ऑफ द अदर स्टडीज और अदर रिसर्च, स्टेट ऑफ नॉलेज, कल्चर, कल्चर में भी डिफरेंट फ्रॉम वन प्लेस टू द नेक्स्ट प्लेस, सो द फाइंडिंग्स मस्ट बी देयर. यहाँ का कल्चर अलग है, नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो वहाँ का कल्चर अलग है, ये भी डिपेंड है. एंड कंटिन्यूटी ऑफ द रिसर्च. Hypothesis testing, it is very important. Hypothesis testing कैसे करते हैं या क्या मतलब है इसका hypothesis, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा. What is the testing of hypothesis? किसी को कोई आइडिया? आपने ये हाइपोथेसिस बहुत सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूँ, उसको छोड़ दीजिए. आपने ये हाइपोथेसिस बनाई कि गर्ल्स आर मोर इंटेलिजेंट देन द बॉयज इन क्लास 10 और इन यूजी ऑफ इंटीग्रल यूनिवर्सिटी. गर्ल्स आर मोर इंटेलिजेंट देन बॉयज इन यूजी क्लासेज ऑफ इंटीग्रल यूनिवर्सिटी. आपने ये हाइपोथेसिस बनाई. क्या करेंगे इसमें? डेटा लेंगे. यू हैव टू कलेक्ट द डेटा फ्रॉम द मेल एंड फीमेल और द यूजी क्लासेस ऑफ इंटीग्रल यूनिवर्सिटी. डेटा आपके पास आ गया. डेटा आपके पास दो ग्रुप में आया, एक मेल का है, फीमेल का है. I2 का डेटा आपके पास आ गया, यूजी स्टूडेंट. आपने इसको टेस्ट किया. सिंपल सी बात हम करें तो आपका इंडिपेंडेंट ग्रुप है, ठीक है. आपने इसमें टी लगा दिया, ठीक है, स्टूडेंट टेस्ट इसको कहते हैं. टेस्ट लगा दिया और जो भी टी की वैल्यू आई, 500 बच्चों का आपने डेटा लिया. मान लिया 250 गर्ल्स है, 250 बॉयज है. दो ग्रुप बना, इंडिपेंडेंट ग्रुप है. आपने टी लगाया और वैल्यू आ गई मान लिया 3.5. हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस है. देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द IQ ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स. टेस्ट किया, वैल्यू भी आ गई. अब क्या करेंगे? इस पे दो ही कंडीशन हो सकती हैं, या तो आपकी हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी और एक्सेप्ट. किस कंडीशन में रिजेक्ट होगी, किस कंडीशन में एक्सेप्ट? दूसरे वर्ड्स में मैं आपको बताऊं, आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करें, साइंसेज में या बिहेवियर साइंस में भी करें, और आपने किसी एक्सपेरिमेंट को नंबर ऑफ टाइम्स किया, 500, 1000, सॉरी 100 टाइम्स या 50 टाइम्स या 20 टाइम्स आपने किया, ठीक है. कितनी बार सेम रिजल्ट आता है, कितनी बार डिफरेंट आता है. बेसिकली रिसर्च में दो या तीन तरह के, मैक्सिमम हम लोग दो ही तरह के देते हैं. जो टेस्टिंग के लिए मैंने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यहाँ पे लिखा है या परसेंटेज लिखा है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए इट इज ऑलवेज सम परसेंटेज लाइक 5% और 1% और 10%. ये भी होता है, कई जगह दिया जाता है. मोस्टली वी आर यूजिंग द 2 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. आगे है क्राइटेरिया फॉर द yes level of significance. We are using 0.05,
are 0.01 level of significance for accepting or rejecting the hypothesis. What is 0.01 or what is 0.05? These are the level of significance on which we are accepting or rejecting our hypothesis. किसी को कोई आइडिया है? बेसिकली लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से हम हाइपोथेसिस को या तो एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, और पहले से ही हम ये बना के चलते हैं कि हमें ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेना है। 0.05 का मतलब ये हुआ कि आपने 100 टाइम्स कोई एक्सपेरिमेंट किया और उसमें 95 टाइम्स आपका सेम रिजल्ट आएगा, 5 टाइम्स इसके बियॉन्ड है। हाइपोथेसिस आपकी मान लिया 100 टाइम्स आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया तो 95 टाइम्स वो एक्सेप्ट होगी या रिजेक्ट, 5 टाइम्स वो जस्ट इसके बियॉन्ड है, ये इसका यस 95। सिमिलरली 0.01 मीन 99% सेम रिजल्ट रहेगा, 1% बियॉन्ड है। इसमें एक कॉन्सेप्ट हो रहा था डिग्री ऑफ फ्रीडम का, मैक्सिमम लोगों ने पढ़ के आया होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम होता क्या है। जिस फ्रीडम पे या जिस नंबर ऑफ फ्रीडम पे हम अपनी बात करें उसको डिग्री ऑफ फ्रीडम कहा है, ठीक है। मैं उसमें नहीं जाऊंगा, वो अलग कंसेप्ट हो जाएगा, कब मौका लगेगा तो आपको बताएंगे। यही चीज हमने यहाँ पे लिखा है, 100 में 1 टाइम इसका मतलब क्या है 0.01 और 100 में 5 टाइम्स इसका मतलब 0.05। इसी पे हम अपनी हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। एक और कॉन्सेप्ट इससे जुड़ा हुआ 110 और 210। मोस्टली नल हाइपोथेसिस जो बनाई जाती है, वी आर यूजिंग नल हाइपोथेसिस, वी आर यूजिंग द टू कैटेगरीज in which there is no significant relationship or there is no significant difference. Two tests. And in one test, in directional hypothesis, like girls are more intelligent than boys, it is a directional hypothesis. Declarative hypothesis, in which you have declared also that girls are more intelligent than boys. In this type of hypothesis, we are using one term. Basically, it is related to the numerical value of P or different statistical tools, techniques. It is based on statistical numbers or the values. We can accept or reject. We accepted it, but I cannot accept it until or unless we have tested. And this is related to the error, in which sometimes we do error also, in which null hypothesis is true, acceptable, but we reject null hypothesis. Then we are doing alpha error or type 1 error, when hypothesis is true, but we reject it. And it is also based on the level of significance. 0.05 पे एक्सेप्ट हो रहा है, 0.01 पे कर देंगे तो सॉरी रिजेक्ट हो रहा है, 0.01 पे कर देंगे तो एक्सेप्ट होगा। कई बार हम लोग करते हैं। So, and when null hypothesis is false, but we accept the null hypothesis, in this case, type second error. There are two types of error, type 1 and type 2. Type 1 is when the null hypothesis is true, but we reject the hypothesis. And when the null hypothesis is false and we accept the null hypothesis, then type second order. Okay. Thank you very much. If you have any questions, please ask.
If you have any questions related to the hypothesis or general, then you can ask. पूछ सकते हैं आप कुछ भी. डरिए नहीं भाई, पूछिए आप. रिसर्च स्कॉलर आप लोग हैं, यहाँ डरने की जरूरत नहीं है. कल आपको भी यहाँ से आके प्रेजेंटेशन देना होगा. और ये दिमाग में निकाल दीजिए कि मैं गलत हूँ. रिसर्च में या नॉर्मल कोई भी चीज़ गलत या सही नहीं है. ठीक है, ये हमारे देखने का तरीका है. आप ये दिमाग में बिल्कुल मत रखिए कि मैं जो बोलूँगा वो गलत है. ऐसा कुछ नहीं. आप सीखने के लिए आए हैं. हम लोग भी आपसे सीखते हैं. ठीक है, कुछ भी आपको ये आइडिया लगे या कुछ आप उसमें ऐड करना चाहते हैं वो भी ऐड कर सकते हैं. इससे नहीं पूछना. अच्छी बात है. इसका मतलब कि ज़्यादा चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही. इसीलिए भाई दो चीज़ें हो सकती हैं, आपको पूरा समझ में आ गया या बिल्कुल नहीं आ रहा. हम लोग सबको एक्सेप्ट करते हैं. ठीक है, ओके. एंड करें. थैंक यू वेरी मच.